And welcome to this crypto mastery course. You are at module 8 now. After watching this module, you'll be done with 80% of the course. And I hope that you've been practicing and you've been learning all these new things. And I hope that these things will help you out when you become a trader. आज के मॉड्यूल में हम दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज़ गोना बी द Bollinger Band and the second thing is going to be portfolio management and how we should manage our portfolio in the short term, in the mid term, and in the long term, and what are some ways to navigate through the bear market. So in हम चंद चीज़ों के बारे में बात करेंगे. I will once again try to make the lecture as precise as possible so that you guys understand. And secondly, as always, if you have to take a break, please do what you have to right now so you watch the entire lecture. ये जितने भी आपको मॉड्यूल्स अभी तक आपने देखे हैं, ये सारी वो चीज़ें जो मैं पर्सनली अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ करता हूँ. And once you are done with the course, you obviously might want to research some more and make a system for yourself. As a trader, one of the most important things that you need to understand is कि हर trader का अपना एक system होता है जिसको वो trade करते हैं no matter what. तो आप जब अपना trading setup ढूंढ लें, whether it's using the RSI, whether it's using volume or just levels, once you find your system, do not join too many groups, whether it's free groups or whether it's paid groups, or don't follow too many people on social media platforms like Twitter, जो crypto के बारे में post करते हैं. Because the first thing is, a lot of these crypto influencers only post things for their own benefit. Most of the time they're either shilling a coin because they've been paid to do so, और आप हमेशा जो वेल्स हैं उनकी एग्ज़िट लिक्विडिटी बनते हैं. और आज थोड़ी सी हम बात एग्ज़िट लिक्विडिटी की बात करेंगे कि हाउ टू नॉट बिकम द एग्ज़िट लिक्विडिटी ऑफ वेल्स एंड मार्केट मेकर्स, बिकॉज उनका यही काम होता है कि लोगों को पहले फोमो इन करवाएं, जो आम रिटेल होती है. एंड वंस दे मेक पीपल फोमो इन, that's when they start selling, and we have to bear the results of that. So let's go ahead and first talk about the Bollinger Band. तो ये मैं Bollinger Band खोल रहा हूँ. Again, these can be used on any time frame. अभी for example I am using the 4-hour Bollinger Band. कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सीखेंगे और समझेंगे तो आपका बड़ा बेनिफिट हो जाएगा. Even scalping, this can help you out as well. अगर आपने मेरी Bollinger Band की वीडियो देखी है, um, so you would know that you can trade very easily on shorter time frames using these Bollinger Bands. um, and Bollinger Band का होता ऐसे कि there's an upper Bollinger Band, then there's a lower Bollinger Band, and right now I've turned the mid of the Bollinger Band off, but there's usually a middle of the Bollinger Band also. Now, what usually happens is the top of the Bollinger Band usually gets respected, uh, and price starts to come down on whatever time frame you're looking at. And in perfect trading conditions, the bottom of the Bollinger Band gets respected also. You have to also keep an eye on the RSI for both the top and the bottom. So, for example, if the coin is on top of the Bollinger Band and the RSI is in the oversold area, तो वो आप 3 entries लेके you can enter into a short position if you are a future trader. Similarly, if you're a spot holder or do futures, तो अगर ये bottom पे आया हुआ तो you can always long from the bottom of the Bollingers using 3 entry rule. And the best thing for this is that आप HTF पे levels बनाएं and फिर उसके मुताबिक trade लें. Now, one other thing that I wanted to tell you guys is that these things work when the Bollinger Bands are wide apart.
मतलब for example, if the price of a coin is like this, going like this, right, इधर, और Bollinger Band ऊपर से has expanded, नीचे से has expanded, and there's space between, you know, the coin from the bottom to the top, then that's when the Bollinger Band gets respected. If at अगर वो ऊपर आता है टॉप पे और आर से भी टॉप पे होती है तो वो रिस्पेक्ट मिलती है, और उधर से वो गिरना शुरू हो जाता है, एंड वी ऑलवेज लुक फॉर डाइवर्जेंसेस. डाइवर्जेंसेस मैंने आपको पिछले चंद लेक्चर्स के अंदर समझा दिए. एंड अगेन, from the bottom of the Bollinger Band, if the RSI is at the bottom, whatever time frame you're looking at, and there's a gap, and it's not squeezed the Bollinger Band, then bottom से भी उसको respect मिलेगी, and if you have levels around that, वो आपको और मदद मिल सकती है उसके अंदर with Bollinger Bands. एक जो चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना है कि कभी कभी आप किसी कॉइन को देखते हैं तो वो, if you see here, if you see here Bitcoin on the 4 hourly time frame, अगर आप इधर से ट्रेड लेते शॉर्ट का, इवन दो RSI ऊपर आ रही थी, you would have you would have been expecting कि इधर से नीचे आएगी प्राइस, but the price went all the way up over here. And the reason for that is whatever coin that you're looking at on whatever time frame, अगर अगर आप देखते हैं कि Bollinger Bands squeeze हो रहे हैं, if the Bollinger Bands are coming together like they are over here, um, like over here, तो इसका मतलब है a big move is about to happen. एंड आपको अगेन जो मैंने चीज़ बताई हुई है, DDE, data determines everything. Once you get a feel of how the Bollinger Band works and what the market sentiment is, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि if the Bollinger Bands have a direction towards the upside, there are chances कि the trade will break out towards the upside. But if the Bollinger Bands are facing downwards and they squeeze together over here, and price comes, you know, closing in somewhere around here, then there are more chances that the price will go down. Now इस जगह पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि Bollinger Band करीब आए हुए हैं, Bollinger Bands are squeezing together, और जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्क्वीज करेंगे उतनी बड़ी मैसिव मूव मिलेगी Bollinger Bands के मुताबिक. और ये हर कॉइन के ऊपर काम करती है, एंड आई विल शो यू you know, previous data also. So now you see that the Bollinger Bands are squeezed together, और इधर से आपको move मिल गया towards the upside where Bitcoin went from 26,000 all the way up to 31,000, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्क्वीज़ के बाद आपको इतना बड़ा पंप मिला था. सो इमेजिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर Bollinger Band स्क्वीज़ करें तो वो कितनी बड़ी मूव होगी. अगेन इफ़ वी सी ओवर हियर, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि Bollinger Band, this Bollinger Band started going towards the downside and then we saw a dump. But when we saw a dump, जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछले मॉड्यूल के अंदर, we want to see a rounded bottom, RSI being floored, and that's when you can expect a pump. So Bollinger Band is a wonderful thing that you can use to get you know, an idea of where the market might go on. So you see how every time it's squeezing, a big move happens. Every time it squeezes, a big move happens. और अगर ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, तो you guys will see that every time the Bollinger Band squeezes, a big move happens, like so over here, इस जगह पे भी. And now we saw that the Bollinger Band was squeezing over here, big move towards the upside. And once again, जिस तरह आप sentiment को समझेंगे उस तरह आपको चीज़ों का समझ आएगा. अब now if we look at the Bollinger Bands over here, इस जगह पे अगर हम देखें जो current price है, you see how the Bollinger Bands are going towards the downside. The direction is going towards the downside, and this is slowly going to start coming to the downside also. And that we also see that there is still room for the RSI to be floored or red volume RA. So there's a chance that, you know, the Bollinger Band might expand and the price goes down. That remains to be seen.
So this is how you guys can effectively use the Bollinger Band to get an analysis of the market. And once again, अगर आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, things like the market structure, levels, RSI, volume, इनको combine करके अपना analysis बनाएंगे with the Bollinger Band, you will be at a better chance of taking the right move, and not getting stuck in a phase. So ये जो चीज़ें इनको मैं यूज़ करता हूँ, और अभी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि volume has been decreasing. The volume has been decreasing. The RSI is also going down, and the Bollinger Bands are headed downwards also. So that suggests that a big move can happen, and that remains to be seen. Now, coming to the second part of the lecture, which is portfolio management. I will quickly touch on this, and then we will talk again in the next module. For your portfolio, आपको हमेशा दो चीज़ें अपने ज़हन के अंदर रखनी है. The first thing is that you need to have uh, three portfolios altogether. The first portfolio is going to be your short-term portfolio, so name it S. The next one is going to be M, mid-term portfolio, and the last one is going to be the long-term portfolio. अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने पोर्टफोलियो को. इट्स अप टू यू how you want to do it, whether this makes sense to you or not, because शॉर्ट टर्म के अंदर आप मैं पर्सनली 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन द शॉर्ट टर्म. आई हैव ड्रॉन अ ब्यूटीफुल 20 ओवर हियर एज यू कैन गाइस कैन सी. 20% मैं शॉर्ट टर्म में रखता हूँ, 20% आई कीप इन द मिड टर्म, एंड 60% I keep in the long term. Now, by short term, I mean trades which last anywhere from 2 to 10 days. Okay, so this is going to be my um, short-term portfolio. My mid-term portfolio is going to be a portfolio that I trade on the HTF higher time frames, and I look for anywhere from 1 to 3 months on the mid-term portfolio. And on the long-term portfolio, I hold for anywhere from 1 to 2 years. So basically buying before the halving and then holding it on until the bull market ends. The reason why I do this, and the reason why I have my biggest chunk in the long term portfolio, उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ट्रेड दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप $1 से एंटर हो जाए और आप उसके प्रॉफिट्स 20% पे ले लें, $1 and 20 पे आप उसके प्रॉफिट्स ले लें. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज़, अगर आपने अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो 60% रखा हुआ है, आपने ट्रेड तो ले लिया, 20% प्रॉफिट्स तो बना लिए, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं रखेंगे तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल मोस्ट लाइकली फोमो इन. इफ़ यू सी द कॉइन अगर वो पंप करता रहेगा, आप फोमो करेंगे एंड यू माइट गेट द रॉन्ग एंट्री. गलत जगह पे आप एंट्री ले लेंगे, जो कि होना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ़ यू टेक इन द कोर्स you would understand the RSI and the levels and not FOMO in. But as a trader, this happens to everyone. I would be lying if I tell you कि मैं कभी कभी FOMO नहीं करता. मैं हमेशा FOMO में trades ले लेता हूँ, and it's wrecked me a lot of times. So I want to save you guys from that trouble. That's why I'm telling you this कि अपने short term portfolio को छोटा करें, because you keep looking for the ideal entry. So for example, अगर आपने 120 भी profit ले लिया और वो $1 पे वापस आ जाते हैं $1 पे, and you try to enter again, you put 60% of your portfolio in, and that crashes another say 30-40%. Now 60% of your portfolio is stuck in that short term trade. You won't be able to do anything. लेकिन अगर अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का, तो उसमें आपको प्राइस के बजाय कॉइन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए. सो द की वर्ड ओवर हियर वुड बी कॉइन्स. सी मैं लगा रहा हूँ, सो यू अंडरस्टैंड कॉइन्स. कि अगर आपके पास शुरू में किसी भी प्रोजेक्ट के 1,000 कॉइन्स हैं, तो योर गोल शुड बी विद इन बिफोर द बुल मार्केट स्टार्ट्स, आप अपने गेन्स को कंपाउंड करें as much as you can. So the profits that you make from here and here, you compound them into
योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. सो अगर आपको फॉर एग्जांपल मिड टर्म पोर्टफोलियो के ऊपर 2x होता है, तो आप 1x से फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, 1x के वो कॉइन्स एक्यूमुलेट करें फॉर लॉन्ग टर्म, विच यू हैव बीन डूइंग. सो अगेन सेम थिंग फॉर दिस एज वेल. अगर आपने किसी ट्रेड में 20% बनाए, $100 आपने लगाए हैं और आपके $20 प्रॉफिट हो गए हैं, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल पुट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स इनटू अ कॉइन होल्डिंग. कॉइन लेंगे, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करेंगे. बाकी जो $10 हैं आप उसको या तो विड्रॉ कर सकते हैं या आप उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट वंस you take a trade, for example, if you take a trade for $1,000, right, and you make 20% on it, so you made $200, and you see the market sentiment shows that the coin keeps pumping again and again, और आपको दिल करे कि वो जब रीटेस्ट पे आए आप फिर से ट्रेड के अंदर एंटर करें, you will never again enter with $1,000. ये रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल रखना है. You will enter maybe with $200 or $300, बिकॉज उसके अंदर अगर $200-300 आपको फॉर एग्जांपल 20-30% लॉस भी हो जाता है, तो आपका ओवरऑल वैसे ही जो प्रॉफिट था वो $200 का था. तो इवन इफ़ यू लूज़ यू नो 20-30% on $200-300, overall for the day you will still be in profit. Same thing for the short term coin as well. And then obviously इसको आपने long term portfolio को compound करना है, so that you can take maximize profits. Because जब bull market के अंदर alt coins जो आपने लिए होते हैं वो when they, if for example if you dollar, आप अगर आपकी एंट्री $1 पे है और जब बुल मार्केट आती है वॉल्यूम इंक्रीजेज, जब वो 6-7-8x की उस पर चला जाएगा, देन you won't need to worry about entries again and again. You just bought one coin and it's doing really well, and you're just gonna start taking profits slowly as the market comes to a close. So these are some of the strategies that you can use to manage your portfolio, and then obviously use the Bollinger Band. This was it for module 8. I will see you guys in module 9. I hope this was helpful and you implement these strategies into your portfolio. If you have any questions, feel free to rewatch the lecture, or you can join our Discord. जिसका link मेरे Instagram bio पे होगा. I will see you guys in module 9. Take care of yourself and your families, and goodbye.